Hello friends and welcome to the new series. This series is about CSS which is cascading style sheets and ये यूज होता है जिससे कि हम अपने HTML फाइल को थोड़ा स्टाइलिंग दे सके। इसमें डिफरेंट पर्पस ऑफ स्टाइलिंग रहता है जिसमें आप इनलाइन स्टाइल हेड के अंदर यूज कर सकते हैं या फिर आप सेपरेट फाइल की तरह भी यूज कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैं इसमें एक मेन डॉट HTML फाइल बनाऊंगा और एक इसमें बनाऊंगा स्टाइल डॉट main.html file बनाऊंगा and let's start with having HTML tag, in that one head tag and then a body tag like this. And in my head tag I'm going to take one title tag and say CSS tutorial like this. Let me just copy the path and in our browser, let's quickly open a browser and within the new tab let's see this. Okay, so now let me type one heading. Let's say hello world. Okay, like this. And if I save, you can see hello world यहाँ पे print हो गया है. अब basically styling आप किसी भी CSS फाइल में तीन टाइप से कर सकते हैं. 3 ways to apply CSS styles to your web page. Number 1 is inline style. Second will be inside head tag, and third is SVERT, separate file for CSS and linking with link tag. So in this I'm going to start with inline styles. So inline style के लिए आप लिखते हैं यहाँ पे एक attribute style is equal to, and जो आपके properties रहते हैं आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, like for example color red like this. And when you save this you can see यहाँ पे apply हो चुका है. See, and जानने के लिए you can always use CSS properties and list of CSS properties you can get over here. Like Tutorials Republic, you can get all the properties which you can use in entire CSS library. There are a bunch of properties which I will also cover in this course. So let's see. You can also use like font family, and I will use make sense like this. And when I hit save, comic COMIC. Wait, let me use Times New Roman. Not working. Show you on family in CSS using fonts, and then you can use like cursive. To be precise, you can use cursive, and then when you hit save, you see this fonts changes. So like this, you can give many stylings. Like if I use font size, let's say 50 pixels, and I hit save, you see this becomes more bigger. If I reduce the size to 100%, now you can see. And if I do it like 150 pixels, then you can see this. Okay.
If you need border around this, then border 1 pixels solid black. So you got a nice border. And so like this, you can apply inline styles to any element. आप किसी भी element पे इस तरीके से stylings लगा सकते हैं. But actually, this way of applying a style to an HTML element is not appropriate. ये एक अच्छा तरीका नहीं है. So this should be least used or when very अर्जेंट. लाइक आपको कोई डेमो पर्पसेस के लिए किसी को कुछ कलर दिखाना है, उसी टाइम आपको ये वाला जो चीज है इसको यूज करना चाहिए. इनलाइन स्टाइल इज नॉट recommended because this reduces the performance. Okay, this reduces performance. So like this, you can apply any styling to your element, but also there is one more very efficient way of applying all the styles. Like in head tag, you can use style tag, give the element, and then you can give color red, font size, let's say 150 pixels, font family, let's say I will take Courier Sans new monospace, and border will be 1 pixels solid black, like this. And if I hit save, you get the same styling again. Okay. So हमारे CSS में we have 3 types of selection. Okay, there are 3 types of selection. 3 types of selection for using styling to a HTML element. सबसे पहला आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो रहेगा एलिमेंट बेस्ड सिलेक्शन. सेकंड आपका रहेगा क्लास बेस्ड सिलेक्शन. एंड फाइनली आपका रहेगा आईडी बेस्ड सिलेक्शन. एंड फाइनली एक आपका मेगा टाइप रहता है, उसको हम बोलते हैं combined selection. So today we will be talking about element and class selections. So आपने जैसे देखा ये एक h1 टैग था एंड इसको मैंने डायरेक्टली इसके टैग के नेम से ही कॉल किया है अपने CSS में. So this is called element selection. This is normal element selection. Element selection. Okay, this is element selection. But suppose I'm having another element which is h2 element, and this says CSS cascading style sheets. This says like this. If I hit save, you can see cascading style sheets. But this time मैं इसमें element ना लेके class के through use करूँगा. Like for example, class is equal to heading like this. And class को access करने के लिए I put one dot and then your name and like this. इससे हमें पता चलता है कि एक एलिमेंट है एंड डॉट के साथ अगर आप ये क्लास का नेम एक्सेस करेंगे तो आप एक क्लास के ऊपर सारी स्टाइलिंग्स अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं सेम स्टाइलिंग्स यहाँ पे लगाऊंगा बट मैं इस टाइम कलर रखूंगा अपना डॉजर ब्लू लाइक दिस. एंड व्हेन आई हिट सेव यू कैन सी ये स्टाइल्स यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं. So these are the 2 ways of applying styling to your HTML element. And in the later part of the video, I will not make this video too long. So in the later part, I will discuss ID based selection and combined selection, and then इसमें आप कौन सा यूज करना चाहिए एंड किस तरीके से इसका प्रेसिडेंस रहता है, मतलब कि कौन सा किस पे ओवरराइट हो सकता है और कौन से की बात ज्यादा मानी जाएगी इन टर्म्स ऑफ CSS अगर आप एक ही एलिमेंट पे तीनों चीजें यूज कर रहे हैं. So that's it for this video guys. I will see you in the next one. अगर आपको ये यूजफुल लगा है so please do hit like and subscribe the channel and I will bring more videos like this. Thank you and have a nice day.